गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके लोगों के लिए एक नया टॉपिक रिकॉर्ड्स लेकर आया हूँ जो जावा में नया इंट्रोड्यूस हुआ है जेडीके 14 से। तो क्यों रिकॉर्ड आया, किस क्या जरूरत पड़ी, इससे क्या फायदे हुए और क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात करें। तो मेरा नाम राहुल दीक्षित है और आप देख रहे हैं कोड विद राहुल ट्यूटोरियल्स। इसमें मैं पहला टॉपिक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड्स लेकर आया। तो बात करते हैं रिकॉर्ड के बारे में। और रिकॉर्ड से बात करने से पहले हम लोग क्लासेस के बारे में बात करें। तो in Java we can define a classes to hold the which tells the state and behavior of the class. Behavior of the class. And it also used as a plain old Java object. This concept discussed in the to transfer the data, to hold the data, to insert the data into the mm, database. We have some POJOs also. POJO को हम लोग बोलते हैं plain old Java object. बीन कहें, प्ले पोजो कहें, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट कहें, कुछ भी कहें, हम क्लासेस को उस तरीके से भी बिहेव कराते हैं, यूज करते हैं, बिहेव नहीं यूज करते हैं। तो एक बेसिक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखने के लिए हम क्लास किस तरीके से बनाते हैं, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो लेट अस दिस इज एग्जांपल शोइंग इन द Eclipse. There is a public class student and it having two names, first name and last name, and one ID is there. I'm removing the ID here. I'm only discussing with the go for the first name and the last. So let's say we want to create a student data which can just hold the information regarding the student, that is the first name and the last name. So what thing should be there? There must be constructors. If अगर जो मैं क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर ना बनाऊं, if you are not making any kind of constructor in the class in Java, then the class, the JVM provides a constructor known as default constructor. So now I'm going to create the constructor as well. So how to create a constructor through my Eclipse? Go to the source, generate constructors. And I'm also creating one more constructor which is a no argument. Sorry. So this is the constructor. No argument constructor. And what thing more we have to do? We want some getters and setters as well to set the value and to get the values. To generate getters and setters, select all for the first name and the last name. And again, we are going to create the uh, toString method here. That's it. तो अभी मान लेते हैं हमको इतनी चीज की जरूरत है। तो what we are creating? We are creating one class which is having a first name and last name. One constructor is created. One default constructor is no argument constructor is created. Get name, get first name, get last name, set last name, and one to string. So how it is used? So there is a student demo class. What we are going to do? We are creating one student S1 is equal to new student, and what I am doing? I am passing the value Rahul, comma, Java. So now the student S1 is created. If I'm going to print directly sys out into the S1, what should be printed? The value of Rahul and Java. I'm executing it. Now check it out. So what is the output?
The student first name is Rahul and last name is Java 1. If I want to check the equals method, whether the values are same or not, whether the first name is compared as well as second name is compared, whatever the. So I want to compare two objects. Let's say I am again creating S2 student S2 is equal to new student, and again the content is different now. Let's say the same now. Rahul, comma. I'm just copying it so that there is no difference between the names. And if I'm going to compare both the objects, check out what is the output. So S1 dot equals, there is a equals method to compare. Huh? So if I'm going to compare it, what happens? And it is returning a false. Whether यहाँ पे आप देखिए कि डेटा सेम होने के बावजूद इक्वल्स मेथड ने हमें फॉल्स रिटर्न किया. ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया because my class is not implementing, my class student is not implementing equals method. And when I'm going to use that equals method, it is executed the equals method of object class. And object class equals method is comparing the references. So one S1 is created, which is having two values. One is Rahul and another one is Java Wale sir. And S2 is created, and again Rahul and Java. But the address of both the values, the references of both the values is different. And the object class equals method checks the references. So the memory allocation is different, hence the references are different, hence the addresses are not matched, and it is returned false. So what we should do? We have to override the equals method of object class if I want to compare the content. So for that, what we have to do? So for that, we are doing like this. Please check it out. So generate equals method. So I'm creating as well as hashCode display. अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आप प्लीज देखिए what happened here. The objects both are same object. It returns true if the one object pass is null. It executed like that, and student data that if the contents are null, it returns true. So check it out. What happened here? Now, if I am going to execute the same code, what happened? It returns true. Why? Because the content is matched. Now it is checking the contents. So what happened here? To just hold the information, some basic information, the state and behavior, we have to done that much of efforts. We are creating the first name, last name, constructors, getters, setters, and many more. Equals, hashCode, toString methods are there. Hence, records are introduced in Java 14. So what is records? The same thing is happening. So let us assume I want to create a person. बिल्कुल जिस तरीके से हम लोगों ने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया हम पर्सन को क्रिएट करते हैं. तो रिकॉर्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं? पब्लिक रिकॉर्ड पर्सन and you have to pass two variables here. Whatever the variable that state you want to store, first name and last name, like as a student. Now check it out what happened. No code is there. No code is there. No private data, no instance member, whatever. Nothing is there. No equals method is there. Hash code is there. We just use this person class. Check it out in the same phenomenon. Person P1 is equal to new person. And what we are passing here? We are passing here Rahul and here
at the time of creation of the object. Java वाले simple. And I'm directly printing like this, sys out, जैसे कि student class में हमने किया, sys out and P1. Check it out what happened. See? बिल्कुल उसी तरीके से आउटपुट आ रहा है जैसे आना चाहिए क्लास का स्टूडेंट का। So that's why records are used. Why records are used? तो हम एक बार फिर से देखते हैं. Why records? Before records, we write classes to simple hold the data. अगर हमें क्लासेस होल्ड डेटा को होल्ड करना था तो हम क्लासेस बनाते थे. रिजल्ट को डेटाबेस में डालना था, हम क्लासेस बनाते थे. क्वेरी के लिए क्वेरी रिजल्ट जो भी आई उनको क्लासेस. ट्रांसफर करना है डेटा, क्लासेस बनाते. मतलब टू स्टोर द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली वी कैन यूज क्लासेस. और देयर इज अ कॉमन मेथड, मतलब कॉमन तरीके का कोड बनाते हैं स्टूडेंट के लिए भी, पर्सन के लिए भी, व्हाटएवर. तो इस इतना एफिशिएंसी कोड की डेवलपमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड्स पिक्चर. रिकॉर्ड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन जेडीके 14. Why records are introduced? To make code more efficient and more readable. It reduces the boilerplate code. अब जो आपने स्टूडेंट में भी इतना सारा काम किया वो आपको करने की जरूरत ही नहीं है. You can just write like this: public record person. You can pass those values, whatever the members you want to create inside the to hold the object. You can just pass as an argument. No boilerplate code. और ये किस लिए यूज होता है? To transfer the object, to hold the data, to hold the state of an object. You can use records. So there are something or difference between the records and the classes. Now we are going to discuss it. The very first feature is there: records are immutable in nature, like a string. Like a string. Why string is immutable? Immutability ensures the validity of the data without synchronization. Synchronize नहीं भी करेंगे तब भी उसकी intact, उसकी validity पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो एक बार करके देखते हैं रिकॉर्ड्स के बारे में और चीजें देखते हैं. तो रिकॉर्ड्स आर, द वेरी फर्स्ट लाइन इज रिकॉर्ड्स आर इम्यूटेबल इन नेचर. कैसे इम्यूटेबल देखते हैं, एक एक करके हम सारी बातें देखते हैं. इम्यूटेबल का मतलब होता है डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड. हम रिकॉर्ड के डेटा को चेंज नहीं कर सकते. अब यहाँ पे पर्सन है, एक बार पर्सन का डेटा कंटेंट क्रिएट हो गया एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट वैल्यूज चेंज नहीं होंगी. अगर जो चेंज होंगी तो वो एक नया ऑब्जेक्ट होगा. तो पर्सन में तो one thing is there, person has no setters as well. Please see the next line, no setters. क्लास में हमने सेटर्स बनाया था. अगर जो मैं स्टूडेंट की वैल्यू को चेंज करना चाहूं तो इजीली चेंज कर सकता हूं. नाउ s1 dot set first name and I'm changing this value to some another name, Gaurav. And what happened? Check it out. What it is printed. Check it out. The value of that particular object, Rahul, is replaced by Gaurav's. But in person class, you never be create a setters. कैसे देखते हैं और क्यों नहीं कर सकते वो भी देखते हैं. तो पर्सन पर आते हैं. नाउ आई एम, मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें सेटर्स आप क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम फिर भी सेटर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. कैसे सेटर्स बनाते हैं? पब्लिक void सेट फर्स्ट नेम. ठीक है. And what we are doing for that? I am declaring a string first name. And here this dot first name is equal to first name and send. See,
It is showing an error. What it is saying? The first name person first name is final in nature. किसी भी वेरिएबल को आप फाइनल बना देते हो तो उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते एक बार इनिशियलाइज होने के बाद। और सेटल में हम लोग क्या करते हैं? वी आर चेंजिंग द वैल्यू, वी आर रिप्लेसिंग दैट वैल्यू टू सम अनदर वैल्यू, तो इट इज नॉट अलाउड। दैट मीन्स हमने एक बात और सीखी, ये जो फर्स्ट जो भी हम वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं वो फाइनल इन नेचर होते हैं। दोज आर फाइनल इन नेचर, प्लीज चेक इट आउट, दैट आर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट एज वेल एज फाइनल इन नेचर। तो ये बात तो तय हो गई कि सेटर्स नहीं क्रिएट कर सकते, वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए हमने बोला कि रिकॉर्ड्स आर immutable in nature, sir. Once the record is created, we never change the value. Next, इन पे बाद में आते हैं, पहले हम कुछ और बातें देखते हैं। हम रिकॉर्ड्स में कोई नया इंस्टेंस वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते। कैसे? देखते हैं। If I'm going to create, let's say क्लास में हम लोग क्या करते हैं, तो पहले क्लास में जाकर देखते हैं हम लोग। क्लास में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल पहले से क्रिएटेड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और हम एक और वेरिएबल क्रिएट करना चाहें अगर जो, तो क्या इजीली वी कैन क्रिएट इंट आईडी एंड देयर इज नो सच काइंड ऑफ एरर्स, कोई भी एरर ये शो नहीं करता। बट इन पर्सन we can, if we are going to create the variable like this int id, and it is showing an error. Please check it out what it is saying. User declared non-static fields id are not permitted in record। मतलब कहने का है कि हम पर्सन क्लास में सिर्फ स्टैटिक फील्ड के वेरिएबल्स ही क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते। अगर जो आपको कोई इंस्टेंस क्रिएट करना है तो नया आईडी लाना है तो उसको आपको यहीं पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट सॉरी int id, and there is no issue with that because वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आईडी, इसके लिए गेटर्स होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द पॉइंट, दिस इज द फिनोमेना, यानी कि हम इंस्टेंस वेरिएबल रिकॉर्ड्स के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इम्यूटेबल है। नेक्स्ट, we can create static variables, so I can create like this, static int x, no error, no issue. We can create static fields. Next, record by default final in nature। See? हम लिखें या ना लिखें रिकॉर्ड कैसा है? फाइनल है। क्यों? देखते हैं। नेक्स्ट से मैंने कोई दूसरा रिकॉर्ड बनाया, मैंने कोई क्लास बनाई, क्लास लेट्स से एक्स वाई जेड, और मैंने यहाँ पे लिखा एक्सटेंस व्हाट पर्सन, इट इज गिविंग एन एरर। The record person cannot be the superclass of XYZ because record is final and cannot be extended। अगर जो मैं किसी क्लास को फाइनल बना देता हूं तो वो कभी भी इनहेरिट नहीं हो सकती, और रिकॉर्ड फाइनल होता है बाय डिफॉल्ट, so it can never be inherited। That is my next line। Check it out, records cannot be inherited। Now next thing we have to do, अगर जो मैं क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते थे तो हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर तरीके का एक कंस्ट्रक्टर जेवीएम प्रोवाइड करता है। बट पर्सन क्लास में हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पहले से प्रोवाइड होता है, जैसे ये पब्लिक, I click on that, I'm directly using the id feature source and generate using okay, so I'm going to create public person
यस, ये कंस्ट्रक्टर पहले से ही पर्सन रिकॉर्ड में प्रोवाइडेड होता है और इस कंस्ट्रक्टर को हम बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं, कैनोनिकल कंस्ट्रक्टर। अगर जो मैं प्रोवाइड नहीं करता हूं फिर भी ये कंस्ट्रक्टर हमारे रिकॉर्ड में ऑलरेडी अवेलेबल होता है और इस तरीके जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिकॉर्ड में प्रोवाइडेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल कंस्ट्रक्टर, इज नोन एज कैनोनिकल कंस्ट्रक्टर which is provided by default by the JVM. Now what is compact constructor? So check it out, देखते हैं। कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हमको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं। दिस इज अ कंस्ट्रक्टर नोन एज कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्टर। अगर मुझे चेक करना, लेट्स से इफ द पर्सन नेम फर्स्ट नेम शुड बी फर्स्ट नेम डॉट लेंथ is less than 5 or is less than 2, then what it is throw? It throw illegal argument accepted to be more than 2. So we are not going to initialize those things. This type of constructor is known as compact constructor. मुझे इसमें this dot first name is equal to first name लगाने की जरूरत ही नहीं। We are never be initialized because it is by default initialized by the canonical constructor. So this type of constructor is known as compact constructor. Next, all records, कोई भी हम रिकॉर्ड बनाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड नाम के क्लास को इम्प्लिसिटली इनहेरिट करता है, इसलिए रिकॉर्ड किसी भी दूसरी क्लास को एक्सटेंड भी नहीं कर सकता। बट रिकॉर्ड्स इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज फॉर द टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट द रिकॉर्ड्स। नाउ चेक इट विद द एग्जांपल। तो मैंने ऐसा कुछ बनाया और कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्टर को बनाया, देखते हैं क्या होता है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर, पर्सन का जो लेंथ है मैंने 2 से कम रखा, आर रखा फर्स्ट में। तो क्या होता है देखते हैं। क्या रनिंग इट is throwing an illegal exception. It's saying that what is name length should be more than 2. It is illegal exception. It's generated by our compact constructor. Next, if I want to get the value, let's say Rahul, then it is fine. It is executed fine because length is sufficient. And if I want to print only first name, p dot not getters, यहाँ पर getter उस तरीके से नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इस तरीके से getters का यूज करते हैं, dot first name, and if you are going to execute this word, you can easily execute, and it is only printing Rahul. This is getter, not setter. Setter is not in the records. Next, if I want to compare two objects, जैसा कि हमने पहला अभी toString मेथड करके देखा, तो मैंने एक और पर्सन बनाया जिसका नाम p2 है, and I want to compare both the values. p1 dot equals and p2. देखते हैं क्या आता है, and if I am going to execute it, it returns true. No need to worry about equals method, about toString method, about hashCode method. It is implicitly provided by the records. So what is the last line? The last line is toString method, hashCode method, equals method implicitly created. So it increases the efficiency of the developer. Hence, records are included. Thank you for today. Hope you are understanding the records today. We will discuss some new topics in next classes. Thank you.